नमस्कार, सुपरफास्ट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ समीक्षा दादी। आज इस सुपरफास्ट में बात होगी कपिल सिब्बल ने ब्रजभूषण सिंह की गिरफ्तारी न होने पर कसे तंज की। बात करेंगे विपक्षी एकता की कोशिशों के बीच ममता बनर्जी से क्यों खफा हुई कांग्रेस की। राहुल गांधी की अमेरिका यात्रा की, साथ ही जानेंगे लोगों को चिलचिलाती धूप से मिली राहत की। अमित शाह पर भड़के असदुद्दीन ओवैसी की उत्तराखंड के हरिद्वार में बस पलटने से बच्चे सहित 2 लोगों की मौत की। बात करेंगे ब्रजभूषण पर यौन शोषण मामले में आए नए मोड़ की। राहुल गांधी ने भारतीय मुस्लिमों की हालत बताई खराब की, साथ ही जानेंगे ब्रजभूषण पर बीजेपी को संदीप दीक्षित ने याद दिलाया कानून की। और आखिर में बात करेंगे पंजाब में ऑपरेशन क्लीन चला रही भगवंत मान के पुलिस की। इसके साथ और भी कई तमाम बड़ी खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू। 12 साल से भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष और 6 बार से सांसद चुने जा रहे ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ 1 महीने पहले जब पुलिस एफआईआर हुई तो चर्चा होने लगी कि उनकी गिरफ्तारी अब तय है। लेकिन इतने गंभीर आरोपों के बाद भी उनकी गिरफ्तारी न होने से कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। अब कपिल सिब्बल ने भी ट्वीट कर बड़ी बात कही है। सागर दिग्गी के कांग्रेस विधायक बायरन बिस्वास तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। वे जीत के 3 महीने के अंदर टीएमसी में शामिल हो गए। बायरन ने सोमवार 29 मई को पश्चिम मेदिनीपुर के घाटन में तृणमूल कांग्रेस टीएमसी के महासचिव अभिषेक बनर्जी की मौजूदगी में पार्टी में शामिल हुए। इसके बाद से कांग्रेस और टीएमसी में तलवारें खिंच गई हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी अमेरिका के 3 शहरों के दौरे पर हैं। उन्होंने सैन फ्रांसिस्को में प्रवासी भारतीयों से बातचीत की। वे अमेरिकी सांसदों से भी मुलाकात करेंगे। राहुल गांधी मंगलवार रात को अमेरिका पहुंचे थे। सैन फ्रांसिस्को एयरपोर्ट पर राहुल का स्वागत इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष शेम पित्रोदा और आईओसी के अन्य सदस्यों ने स्वागत किया। पार्टी सूत्रों ने बताया कि राहुल को इमिग्रेशन क्लियरेंस के लिए एयरपोर्ट पर 2 घंटे तक इंतजार करना पड़ा। न्यूज एजेंसी के मुताबिक इस दौरान जब राहुल गांधी इमिग्रेशन क्लियरेंस के लिए लाइन में इंतजार कर रहे थे, तब उनके साथ फ्लाइट में यात्रा करने वाले कई लोगों ने उनके साथ सेल्फी क्लिक की। इस दौरान जब लोगों ने उनसे पूछा कि वे लाइन में क्यों खड़े हैं, तो गांधी ने जवाब दिया कि मैं एक आम आदमी हूं, मुझे ये पसंद है। Some months ago, we started a walk from Kanyakumari to Kashmir. Prior to walking, we were finding that the normal tools that we used to use for politics, conversations like this, public meetings, was simply not working anymore. All the instruments that we needed to do politics in India, they were controlled by the BJP and the RSS. You know, people are threatened, cases are put on people, agencies are used on people. So we also are finding that in some way it had become quite difficult to act politically. And that's why we decided to walk from the southernmost tip of India to Srinagar. And when we started, I thought, okay, देखेंगे क्या होता है. After 5 or 6 days, we realized that actually walking 4,000 kilometers is not an easy thing, you know. And I had an old knee injury that started to act up. So I said, now I'm in real trouble because there's no choice. One has to walk, and I'm having quite a lot of pain. And then quite a surprising thing happened. Just I started noticing that
after walking 25 kilometers, 25 kilometers is more than half a marathon. So after walking 2-3 weeks, every day 25 kilometers, I suddenly realized one afternoon that it's strange, but I'm not feeling tired at all. I get up in the morning, 6 o'clock we used to start, and we used to end walking at about 7:38 in the evening, and I was like, this is very strange, I'm not feeling tired at all, what is this? And then I started asking people around that, भाई, ये हो क्या रहा है आपको थकान हो रही है? Everybody is saying to me, थकान तो नहीं हो रही. It's very strange, we're not feeling tired. So I started to think about it, and I realized that actually what was going on was that it was not us that was walking. It was India that was walking with us. Right? And the large mass of people who were coming, all religions, all communities, everybody, kids, they were creating an atmosphere of love and affection where nobody was feeling tired. Almost as if everybody was walking together. सब जुड़ के चल रहे थे और उसमें किसी को थकान नहीं हो रही थी, एक दूसरे की मदद हो रही थी. And that's where we came up with the idea. नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली. वेलकम वेलकम. नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान. भारत जोड़ो. See, the interesting thing about us, about the Congress party, is we have affection towards everybody. If someone wants to come and say something, regardless of what they're saying, we're happy to listen to it. We're not going to get angry. We're not going to get aggressive. We'll nicely listen to it. In fact, we'll be affectionate to them. We'll be loving to them, because that's our nature. So we found that when everybody started walking together, completely different type of energy started coming. And I noticed that the government tried everything. मतलब जो भी उनमें ताकत थी, उन्होंने यात्रा को रोकने में लगा दी. टीवी से उतार दिया, पुलिस को यूज किया, मगर कुछ काम नहीं कर रहा था. और जो यात्रा का इफेक्ट था वो बढ़ता जा रहा था. क्यों हुआ? क्योंकि आप सबने हमारी मदद की. सिर्फ not only in India, Bharat Jodo is an idea that is in all your hearts. And it is about respecting each other and being affectionate to each other. It is about not being violent towards each other, not being arrogant. I can see my Sikh brothers here. Your Guru Nanak Ji, his entire life was about this only. That be humble, right? Be humble, be affectionate. And we walked nothing compared to Guru Nanak Ji. I read somewhere that Guru Nanak Ji had gone all the way to Mecca, Saudi Arabia.
he had gone to Thailand, he had gone to Sri Lanka. So these giants were doing Bharat Jodo much before we were born. Right? And I can say the same. I can say the same for my friends from Karnataka, Basavanaji, my friends from Kerala, Narayana Guruji. Yeah, so every state in India has had these giants. Adi Shankaracharya, everywhere. I mean, and every single one of them said, listen to each other, be respectful, not just of your own religion, not just of your own language, not just of your own culture. Be respectful for all cultures, all religions, all languages, because they are in fact the same. And the assault that is taking place in India, it's taking place on our way of life. Sam Pitroda ji said that he grew up with all people living happily. Different languages, different religions. And that is what is being attacked. Also, the tradition in India, and again something leaders like Guru Nanak ji, Basavana ji, Gandhi ji emphasized, was not to be under the impression that you know everything. That the world is too big, too complicated for any one person to think that he understands everything and he knows everything. And so really that is the disease that Sam sort of outlined. That is the disease, that we have a group of people in India who are absolutely convinced that they know everything. In fact, I think they think maybe they know even more than God. They could sit down with God and have a conversation and explain to him, about what is going on. And of course, our Prime Minister is one such specimen. I think if you sat Modi ji down next to God, Modi ji would start explaining to God how the universe works. Right? Yes, and God would get confused that what have I created? So these are funny things, but really this is what is going on. We have a group of people, who understand everything. They can speak to scientists and explain science to them. They can, speak to historians and explain history to them. They can explain, warfare to the army, flying to the Air Force, whatever they want they can, And at the heart of it is mediocrity. That they actually don't understand anything. Because in life, you cannot understand anything if you're not ready to listen. There's something, the biggest lesson I learned from Bharat Jodo Yatra, that there is something to learn from everybody. We are much older than those children. But I can guarantee you, they can teach us all how to sing. I was looking at them and I was saying, I can't sing like that. It's impossible. So when you look at another person, you have to appreciate that they have an experience, they have a life, they've seen things, and maybe you can learn a lot from them. Maybe if you open your ears, you can listen to them and learn from them. And that is actually the Indian tradition. If you look at our country, you will find that our country has the ability to absorb any idea that comes. India has never rejected any idea. Everybody who has come to India has been received with open arms, and their ideas have been absorbed in India.
And that is the India that we like. India that respects the rest of the world, India that is humble, India that listens, India that is affectionate. And that is the India that you represent. You would not be here if you did not agree with these values. You would, if you believed in anger, hatred, arrogance, you'd be sitting in a BJP meeting. Right? And I would be doing Man Ki Baat. So thank you very much for holding up the Indian flag in America, showing the American people what it means to be Indian, respecting them, respecting their culture, learning from them, and also allowing them to learn from you. You make us all proud. When we think of our country, you're all our ambassadors. When America says Indian people are extremely intelligent, Indian people are masters of IT, Indian people are respectful, all these ideas that have come, they've come because of you and because of your actions and your behaviors. So I thank you very much for that. I came here this morning. Sam organized the flight. I arrived 16 hours, after 16 hours flying, 6:30 in the morning. I thought I'd be tired, but I'm not tired at all because of the energy that you have given me. Thank you. Love you, love you. Now they've asked me to answer your questions. Yes. See that few questions. That also would not happen in a BJP meeting. Yes. No questions there. Okay. Only answers. Thank you. Yeah. Thanks, everyone. Could you please sit down? Thank you. Thank you. So we have many organizations which support. 4 or 5 questions. Yes, sir. Okay, quick. Yes. Or opinions. It doesn't, whatever. Yes. Yeah, but So when we you have. ask people questions, they automatically assume opinion is included. Yes. So we have women who played major contribution for this program to be successful. We have women empowerment organization which helped us to make this event successful. So they have a question specific to women, and I would request Ms. Jhansi Reddy garu to ask that question. Mic. Just give me the other mic. Welcome, Rahul ji, for California. And as a Women Empowerment Telugu Association, my name is Jhansi Reddy. So I would like to ask you 2 questions regarding this women bill that has been, in the court for almost more than half a century. So when the Congress comes in power, Which women's bill? the women's reservation rights. So that bill has been there for more than a quarter century. So as a Congress leader, what is your thoughts on it and how are you going to deal with it? That's of my first question. The second question is, in India, it's very hard for a woman for the safety issue. So what are we going to, offer our next generation of the girls in India? Thank you. So on the women's reservation bill, we are committed to that. We wanted to pass it in the last government, but some of our allies were not too happy with it, and they didn't give us the support for that bill. But I'm confident when we come to power, we'll pass that bill. I think part of the answer to your second question lies in the first question. If we empower women, if we involve women in the political system, if we give women space in the governance of the country, if we give women space in the businesses of the country, we will automatically make them safer.
So I think involving them in politics, involving them in business, involving them in running the country are the way to give them power. Thank you. Thank you. So we have another Tamil community organization, so who united entire Tamil organizations, and they have expressed their support. So they might differ on the Congress party, but they have come here for the love of Rahul Gandhi today. So I would like to invite Mr. Pugal, if you are here. Yeah. Thank you, Sandeep. Hello, Rahulji. My name is Pugal Anbu. I'm the president of Indo-American Society for Science, Reason, and Free Thought. I also represent Tamils who live in Bay Area. On behalf of our people and on behalf of people who believe in science, reason, and free thought, I would like to point out we are honored, humble, and most truly proud of your journey about opening up the shops of love on the streets of hate all over the India. Tamils have long tradition of harboring brotherhood mindset throughout their civilization. 3,000 years ago, our forefathers said, Yadum Ure, Yavarum Kelir, Pirapukkum Yella Uyirkum. Translation, all human beings are created equal, and every town is our town, everybody is our relative. To us, India is like European Union, with each state having its own language, its own tradition, its own festivals, its own cuisine, dress code, way of living, etc., etc. They are all different, yet we live under one country called India. Therefore, it is deeply saddening to us when someone from the union government trying to impose one language, one culture, one tradition, one religion, one school, etc. Recognizing this diversity to make India a robust country, our beloved leader, the Dravidian icon, former Chief Minister Dr. C.N. Annadurai proclaimed, both in Parliament and in public forums, for Manilathil Suyachi Mathil Kutachi, which means autonomous rule at the state level and federal rule at the union level. Dear Rahulji, you have studied in America and you have traveled within United States extensively, and you know much better than anyone else in this room that America is the best example of federalism. Each state has its own constitution, its own Supreme Court apart from federal laws. Whereas in India, Congress party did have its own share of problems in the past. But the times have changed. The new thinking has emerged, and you are the epitome of the new thinking. You are the beacon of hope on the streets of hate in India. Therefore, my question to you is that, like United States of America, what's your thought on making India as a true United States of India? Thank you, Ji. If you read our constitution, the definition of India in the constitution is a union of states. And within our constitution is the idea that the languages, cultures, histories of each one of our states has to be protected under the union. So what you're talking about is already incorporated in our constitution. It's already there. The BJP and the RSS are attacking that idea that you mentioned, and also the Constitution of India. That's the fact. Now, for me personally, I understand that the Tamil language is more than a language to Tamil people. Right? It is not just a language. It is their history, it is their culture, it is their way of life. And I will never ever allow Tamil language to be threatened. Right? Because for me, threatening the Tamil language is to threaten the idea of India. Just like threatening Bengali or threatening Kannada or threatening Hindi or threatening Punjabi
are all attacks on India. Right? So, our strength, unlike many other countries, our strength comes from our diversity. Our strength comes from accepting that we are all different, but we can work together. And that is an idea that I'm sure you and the Congress party are protecting. Thank you. Thank you. Thank you, everyone. Please put your questions brief, respecting everyone's time. I know you have opinions, but please put your questions brief. Next question is Mr. Karthik from Ambedkar King Study Circle. Can we allow people to, yeah, hold on. Yes. These are, please appreciate these organizations have put together this amazing event. All, there are Telugu, Tamil, Kerala, Kannada, all are together to make this event successful. Respect those organizations. Thank you. We'll do. We've got 5 questions, don't worry. There's more than enough. We can add a few also if you want. Hello Rahulji, I am Ganapati from the Ambedkar King Study Circle. First of all, welcome to San Francisco Bay Area. We wholeheartedly thank you for taking up the fight against the fascism. So this rise of fascism is not a mere coincidence. So we believe in the social and the economic equality in the society, and the inequality actually creates a conducive environment for fascism to emerge. So my question is what is the plan of the Indian National Congress to uproot the economic and the social inequality which creates this condition for fascism in the Indian subcontinent and also at the global level? One of the things that we are suggesting is when we were in government, we had carried out a caste census. And the idea behind the caste census was to take an X-ray of Indian society, right? To find out what are the exact demographics of our country, right? What are the different communities? What are the different castes? How many people in each community? How many people in each caste? Because without understanding our demographics and without understanding who is who, it is very difficult to distribute wealth, distribute power effectively. So that was one idea that we had. And we've been putting pressure on the BJP to release the caste census, the numbers in the caste census. They are, of course, not doing it. And we'll continue to apply pressure. And if we come to power, we will do that. But we are committed, as the Congress party, to make India a fair place. And we understand deeply that India today, in terms of its treatment of Dalits, tribals, poor people, minorities, is not a fair place, right? And there's many things that can be done. There is the Nyay scheme that we had, which was aimed at providing a minimum income to all Indians. There are ideas like Manrega. I think an increase in public education, increase in public health care. I think these are all things that can be done to make India a much more equal and fair place. Thank you. Thank you. We have our next question from Silicon Valley Christian community, Mr. Jay. Rahulji, now the Parliament Lok Sabha seats are increasing to 888. What's your take on it? There's a proposal that Modi ji is actually working on. It is going to entirely be based on population. It is going to tilt, the orientation towards the highly populous states, getting more and more lion's share of the revenues and everything. So how is it going to change everything? Minorities are going to get even more depressed. Majorities are going to be, making everybody vulnerable. So what's your take on it? I'd have to look at exactly how they're thinking about doing it.
But I think one has to be very, very careful when one changes the representative structure of a country. So I'd be quite interested in understanding exactly how they've come up with the number 800 and what are the criteria that they're using. These things should not be done flippantly. India is a conversation. India is a negotiation between its languages, between its people, between its histories and cultures, and that negotiation has to be fair. Meaning, all parts of India, all the states of India should feel that there is fairness in the process of negotiation. If I see exactly how they're coming up with 800 and what is the design, then I would be able to answer whether I agree with the number 800, but I haven't seen the way they're calculating it. Thank- Yeah. Yeah, but it depends how the ratios change. Yeah, it is currently based on the population, but you'll have to see how the ratios change. You know, I think the Parliament House, these are distractions. The real issues in India are unemployment, price rise, spread of anger and hatred, a crumbling education system, price of education, price of healthcare. These are the real issues. BJP can't really discuss them, so then they have to do the whole scepter thing, you know, lying down and doing all that. So, aren't you happy I'm not lying down? Thank you. Thank you. One more question from Bay Area. One more question. भैया One हाँ more करेंगे question. भैया मगर डिस्टर्ब मत कीजिए ये इनका One more process- question. हाँ So करेंगे, इंसाफ this is करेंगे। from the Bay Area Muslim community. Please इंसाफ respect the करेंगे। community. One question from the Bay Area Muslim community. This is Mr. Mohammed Khan. Please go ahead. मिलेगा राहुल जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑल द वे हियर. आपने जो ये नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोली है, उसका बहुत बहुत शुक्रिया. आई थिंक दिस इज़ समथिंग विच we were starving for as Muslims from the Bay Area. We all want to thank you for your time and for your efforts in coming all the way here. As you know that, Muslims have the security threat today. It was never before. The way we see today, like whenever we call and talk to anybody, it's like, kya ho raha hai yahan pe? What's going on? There are so many different laws which are getting implemented, which were not even implemented earlier. If it is just of the security, it's okay. But then if it goes on and on, like inching up, le lijiye, Musliman bachon ko jo hai, they are putting in the jails for the crimes which they have not committed. What strategy will you adopt, or what hope are you giving to Indian Muslims, which is going to change the whole thing back to the point where we were and get back to the normal stream to develop India? The best way for me to explain that is the line नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान. That is the best way I can say it, which is that it is felt most strongly by the Muslim community, okay, because it is done most directly to them. But in fact, it is being done to all minorities. I can guarantee you that the same way you're feeling attacked, I can guarantee you my Sikh brothers are feeling the same thing. I can guarantee you my Christian brothers are feeling the same, sisters are feeling the same thing, right? I can guarantee you the Dalit community is feeling the same thing. Tribal community is feeling the same thing, right? In fact, anybody who is poor in India today, right? When he looks at the extreme wealth that a limited number of people have, in some way he feels the same thing that you feel. That what is going on? How is it that these 5 people have
lakhs of crores, and I have nothing to eat, right? So you feel it most because it is directed at you most aggressively. But it is a phenomena that is taking place against everybody in India, right? And you cannot cut hatred with hatred. It's impossible, right? You know that. You can only cut hatred with love and affection. And I was surprised at how easy it was to erase hatred in India. I was shocked. I didn't imagine that भाई इधर से उधर चलने से इतना असर पड़ेगा. I didn't imagine it. Right? Indian people, as you yourself have said, they don't believe in this stuff. They don't believe in hating each other. They don't believe in killing each other. This is a small group of people who have got control of the system, who've got control of the media, and who are fully supported by, big money. Right? But this is not the large mass of Indian people. I can guarantee you, I walked from Kanyakumari to Kashmir. I can guarantee you there are more people who believe in love and affection than hatred. Millions and millions more. So don't be pessimistic. Also, I'd like to point out another thing. This happens periodically in India. What is happening, for example, to the Muslim community in India today happened to the Dalit community in the 80s. If you went to UP in the 80s, the Dalit community, what is happening with the Muslims was happening with the Dalits there. So periodically this type of stuff happens and we have to challenge it, we have to fight it, and we have to fight it with affection, not fight it with hatred. We will do that. Thank you, Rahulji. And one last question from the most important community of entire world, that is students. So we have one interesting student from UC Berkeley who wants to, literally begging me to ask one last question. She promised that she would conclude it. Wait. One more question. Welcome, Rahul sir, and thank you so much for your win in Karnataka. You've made a lot of people very, very happy. We've literally cried tears of joy, so thank you. So my question for you would be, we have a lot of students who helped out here today. We really feel passionately for your cause, and which is our cause now. But what would you say to us? We want to go back to India. We want to represent our country, but we see how the athletes, the youth, the wrestlers in recent times are being treated. It's very undignified. We feel very discouraged. So what would you say to us to kind of bring the sense of wanting to go back out there for our country? Yeah, please realize that there's a huge distortion. India is not what the media shows. The media likes to show, a particular narrative. It likes to promote a particular narrative. That is actually not what is going on in India, right? It was very clear to me in the Yatra. It's in the media's interest to project these things. It helps the BJP, right? So don't think that everything you see in the media is the truth. And as a young person, your country needs you, right? And your skills and your energy will be very useful to your country. So if you feel like going back, do go back and help out. Thank you. Thank you, Rahulji. Thank you. And I picked up Rahulji somewhere in the morning, 8 o'clock. It's 8 o'clock. So please. 1 minute. So let me conclude it, right? He's a normal human being like us. He's not superhuman. He's normal human being. Please, 1 minute. Let me thank the organization. So last question, I like the question, which is, what do I suggest that you do? Right? You are all ambassadors of a particular vision of our country. You believe in humility, you believe in respect, you believe in being affectionate to each other. So do not answer anger and hatred with love and affection. Show them that you're not like them.
You should support the ideas that will defeat the BJP. Thank you very much. यूपी में अगले 2 दिन बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश में बारिश की बूंदों से भीषण गर्मी से राहत मिलेगी। प्रदेश के कई शहरों में सुबह शाम बादल छाए हुए हैं। सुबह और शाम में हवा में ठंडक महसूस की जा रही है, लेकिन सूरज निकलते ही उसकी तपिश परेशान कर रही है। आज बादल छाए रहने के साथ बूंदाबांदी हो सकती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों में अगले 2 दिनों तक 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा के साथ बारिश हो सकती है। AIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर भड़काऊ बयान देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर तंज कसे हैं। उन्होंने अपने भाषण में भाषाई गरिमा का ध्यान न रखते हुए गृह मंत्री के खिलाफ तू तड़ाक वाली भाषा का न सिर्फ इस्तेमाल किया, बल्कि चैलेंज देते हुए कहा कि अगर दम है तो गुम्बद तोड़कर दिखा। नवोदय स्कीम के तहत 200 करोड़ रुपए सैंक्शन हुए। अब आप बताओ, स्टीयरिंग मेरे हाथ में। अच्छा, अगर मेरे हाथ में है तो अमित शाह आपको दर्द क्यों हो रहा? मंदिर तो बन रही ना आपकी। ये बीजेपी के लोगों को तकलीफ क्यों हो रही है? अगर मेरे हाथ में स्टीयरिंग है तो इतने करोड़ रुपए मंदिर को लगे, बोलो ना तुम। नहीं, गुम्बद को तोड़ेंगे। अरे तोड़ जाके, तेरे दम है तो बोलता काहे को? अरे तोड़ेंगे, अरे क्या लुंगी उठा के डरा रहा हमको? जाके तोड़ के दिखा हम उधर को। नहीं, लू गाड़ी का स्टीयरिंग इनके हाथ में है। बाप की जागीर है। जो मुंह को आप बोले तो मैं भी बोल सकता हूं बात। नरेंद्र मोदी से लेके पूरा छिद्र निकाल दे तो RSS का खड़े खड़े यहां पे बोले जा रहे। ओल्ड सिटी पे सर्जिकल स्ट्राइक करते, बाप की जागीर है। सब करते, बोलो मैं अकेला ठहर तो आओ देखेंगे क्या होता। सर्जिकल स्ट्राइक करके क्या हम क्या चुड़िया पहन के बैठे हैं? और हमारी मां और बहनें चुड़िया पहन के भी बैठी है तो उन्हों काफी है तुम्हारे लिए। पाता बस्ती में सर्जिकल स्ट्राइक, अबे जाके चीन पे कर दम है तो बोल नरेंद्र मोदी को कि चीन को खाल के फेंको। डेप्सांग और डेमचाक से 2000 स्क्वायर किलोमीटर चीन कब्जा करके बैठा। नहीं, हम ओल्ड सिटी पे सर्जिकल स्ट्राइक करते। उत्तराखंड के हरिद्वार से बुधवार सुबह एक दर्दनाक घटना सामने आई, जहां रोडवेज बस अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में 2 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है, जिसमें से एक 1.5 साल का बच्चा और एक कंडक्टर बताया जा रहा है। इसके साथ ही बस में सवार लगभग 35 से 40 लोगों के घायल होने की बात भी सामने आ रही है। यह हादसा हरिद्वार नजीबाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर चंडी चौकी के पास हुआ है। बस में सवार सभी यात्रियों को सूचना मिलते ही अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिनका फिलहाल इलाज किया जा रहा है। हरिद्वार में पहलवानों का धरना भले ही खत्म हो गया, लेकिन अब इन पहलवानों के हक में पश्चिमी यूपी से पुकार भरी जाएगी। पहलवानों के समर्थन में कल खाप मुखियाओं ने पंचायत का ऐलान कर दिया है। रात 12 बजे तक मुजफ्फरनगर में टिकेत आवास पर खाप मुखियाओं और इलाके के बड़े लोगों के साथ बैठक हुई, जिसमें हरिद्वार में धरना खत्म करने के बाद पहलवान बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट भी शामिल हुए और अपना दुख साझा किया। बैठक के बाद भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने ऐलान कर दिया है कि आंदोलन तो बड़ा ही होगा, अंजाम चाहे कुछ भी हो, किसानों से पहले बेटियों को हक दिलाएंगे। उन्होंने कहा कि पहलवानों के साथ अच्छा नहीं हो रहा। मुजफ्फरनगर सांसद संजीव बलियान, बागत सांसद डॉक्टर सत्यपाल सिंह और कैराना सांसद प्रदीप चौधरी से भी बात करेंगे कि क्या हो रहा है, सरकार से भी बात होगी। राहुल गांधी ने भारतीय मुस्लिमों की हालत खराब बताई तो शहजाद पूनावाला ने दिया है करारा जवाब। राहुल गांधी ने अमेरिका में अपने भाषण में कहा कि भारतीय मुस्लिमों की स्थिति आज वैसी है जैसी 80 के दशक में दलितों की थी। इस बयान पर बवाल मच गया है।
जब पूरे दुनिया में बज रहा है भारत का डंका, राष्ट्रपति जो बाइडेन हो, प्रधानमंत्री अल्बनीजी हो, प्रधानमंत्री जेम्स हो, तब राहुल गांधी और भारत बदनामी ब्रिगेड को आती है शंका, क्योंकि इनकी फितरत बन चुकी है मोदी विरोध करते करते भारत के विरोध में उतर आना। और जिस प्रकार की बातें राहुल गांधी ने की, इससे तो फिर से एक बार परिचय मिलता है। पहले यूके में जाकर भारत में हस्तक्षेप की मांग करना और आज यूनाइटेड स्टेट्स में दुष्प्रचार फैलाना। ये वही राहुल गांधी है जो मोदी विरोध करते करते आज नए पार्लियामेंट का भी विरोध करने लगे, उसका भी मजाक उड़ाने लगे और पावन पवित्र सेंगोल जो तमिल कल्चर का, भारतीय संस्कृति का बहुत अहम हिस्सा है, उसका भी मजाक उड़ाते हैं। और दंडवत प्रणाम जो प्रधानमंत्री ने किया, जो भारतीय रीति रिवाज का हिस्सा है, उसको लाइन डाउन कहकर उसका भी मखौल उड़ाने का काम करते हैं, क्योंकि राहुल गांधी जी को भारत पर हमला बोलना है, मोदी पर हमला बोलते बोलते। ये वही राहुल गांधी है जो आज बात करते हैं ट्राइबल्स की, जिन्होंने ट्राइबल्स का मजाक उड़ाते हुए राष्ट्रपत्नी कहा द्रौपदी मुर्मू जी को। दलितों की बात करते हैं, राजस्थान सरकार के तहत सबसे ज्यादा उत्पीड़न दलितों का पिछले 3-3.5 वर्षों में राजस्थान में हुआ है। ये बात करते हैं माइनॉरिटीज की, सबसे ज्यादा दंगे और बड़े दंगे कांग्रेस के शासनकाल में हुए और कभी कोई न्याय नहीं मिला। ये बात करते हैं सिखों की, जगदीश टाइटलर को अपनी पार्टी में रख के। और आज जिस प्रकार से मोदी विरोध करते करते, बीजेपी विरोध करते करते विदेशी धरती पर जाकर फिर से भारत विरोध का परचम लहराने का प्रयास किया है, ये उनकी कुंठा और उनकी फ्रस्ट्रेशन को दिखाता है। ब्रजभूषण शरण सिंह पर बीजेपी को संदीप दीक्षित ने याद दिलाया कानून, सुनिए क्या कहा। देखिए, ये बहुत दिनों से हम लोग इस बात को जान रहे हैं, क्योंकि जिसको कहा जाता है मेजॉरिटेरियन काम, या मतलब एक बहुमत में होने वाले लोगों का एक अन्यथा वर्चस्व कायम करना, तो उसमें उनको हमेशा कोई ना कोई दुश्मन चाहिए। और दुश्मन वो हर व्यक्ति होता है जो किसी न किसी तरह, जिसको अंग्रेजी में मार्जिनल कहा जाता है या हमको सीमांत कहा जाता है। और ये पहले भी देखा गया है कि जब इस तरीके की भावनाएं आती हैं तो कभी किसी धर्म के लोगों को, कभी किसी जाति के लोगों को, कभी गरीबों को, कभी असहायों को एक एक करके चिन्हित कर कर उन पर जो है हमले किए जाते हैं। और ये शंका है, ये और देशों में भी देखी गई है और ये यहाँ भी देखी गई। आपको याद होगा, एक बड़ी प्रसिद्ध कविता है कि मैं जब वो लोग किसी मतलब ए ग्रुप पर आए तो मैंने इसलिए नहीं कहा क्योंकि मैं फलाना नहीं था, फिर किसी और को मानने लगे, मैंने कुछ नहीं कहा, फलाना नहीं था, जब तक मेरे पे आए, जब मैंने चिल्लाया कि कोई बचाए तो और कोई बचा नहीं था। अब आप देखिए ना साहब, पहले कभी किसी ग्रुप पर, आज पहलवानों पर भी सरकार का दमन चल रहा है, कभी किसी पर चल रहा है। तो ये जो बात राहुल जी के कहना है कि जिस तरीके की नीतियां संघ परिवार की और बीजेपी की हैं, ये एक एक करके हर उस समुदाय और समाज को चिन्हित कर कर उस पर कुछ न कुछ राजनीतिक या बाकी प्रहार करेंगे, जिससे वो अपनी राजनीति बढ़ाते रहें। ये तो नरेंद्र मोदी क्या कर रहे थे भाई, जो बार बार जा रहे थे, हर बार बाहर जाके यही नरेंद्र मोदी हैं जो कह रहे थे कि एक समय में शर्म आती है अपने आप को भारतीय कहना। वो किसने कहा था? नरेंद्र मोदी ने तो कहा था ना, या किसी और ने कहा था? वो ठीक है, वो वीडियो नहीं वायरल हो रहा होगा, लेकिन वो आप लोग दिखाइए उसको। इसी प्रधानमंत्री ने कहा था कि भारतीय होना एक तरीके से लोगों के लिए गर्व की बात नहीं थी। तो इस देश को, देश की सीमाओं के बाहर इस तरह की शार्प क्रिटिसिज्म तो किसी ने नहीं की ना आज तक। दूसरा सर, पहलवानों को लेकर आज देश का हर नागरिक सोच रहा है कि इस पर आगे कुछ क्या होना है। पहलवान ने जब ये तय किया कि गंगा नदी में पदक विसर्जित करेंगे, तो बीच में नरेश टिकैत, जो राकेश टिकैत के भाई हैं, उनके और कुछ किसान नेता के कहने पे फिलहाल 5 दिनों के लिए विसर्जन प्रणाली की जो प्रक्रिया है उसे त्याग दिया है और 5 दिनों में वो कार्रवाई चाहते हैं आरोपी सांसद के खिलाफ। देखिए साहब, इसमें सीधी बात है, बहुत दिनों से हम लोग इस बात को कह रहे हैं, कानून बहुत सीधा है। निर्भय के जघन्य कांड के बाद जो कानून बना था, और मैं भी उस कमेटी में था जिसने कानून बनाया था, उसमें यह है कि अगर कोई भी महिला किसी पुरुष पे, या खासकर जो अगर सत्ता में उससे महत्वपूर्ण पद पर हो, जिसमें ये थे, ये रेसलिंग फेडरेशन के चेयरमैन थे और वो रेसलर थी, अगर उस महिला कहती है कि मेरे ऊपर किसी भी तरीके का उत्पीड़न हुआ है, तो उस व्यक्ति को उस पर सीधे सीधे कार्रवाई होनी चाहिए। बात ये नहीं है कि वो गिल्टी है कि नहीं है, मतलब वो दोषी है कि नहीं है, वो कानून देखेगा। कानून ये कहता है, तो ये बात जब है तो फिर इस पर कानून क्यों नहीं लागू हो रहा भाई? हम ये नहीं कह रहे कि बृजभूषण जी गलत हैं या सही हैं, वो अपने पक्ष में जो भी कहते हो, और ये वो कानून है इसमें पूरी बीजेपी ने वोट दिया। शायद बृजभूषण जी भी उस समय सांसद रहे होंगे, तो क्यों समर्थन किया भाई इस कानून का?
ये तो आपको याद होगा, निर्भया के बाद पूरे सड़क पर लोग उतर आए थे कि बड़ी असंवेदनशील कांग्रेस सरकार है, महिला अधिकार के लिए कुछ नहीं कर रही है, कड़े से कड़े कानून लाओ। बीजेपी के तो लोग कह रहे थे कि किसी पर इल्जाम लग जाए तो उसकी सड़क पर फांसी लगा देनी चाहिए। आज इनको पता चल रहा है, तो उस समय क्यों नहीं फिर आपने कहा कि कानून ऐसा नहीं लाना चाहिए? जब आप उस कानून पर पूरे बीजेपी ने पूरी तरीके से समर्थन किया, सुषमा जी ने उसका समर्थन किया, बीजेपी ने समर्थन किया, या आज हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, तब मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तब तो उन्होंने इस कानून के खिलाफ कुछ नहीं कहा। तो सरकार कैसे कानून का पालन ना करे? और इसीलिए लोग कह रहे हैं कि आप कानून का पालन करिए। आप लोगों का बनाया हुआ कानून है ये। मेरी कमेटी के चेयरमैन उस समय वेंकैया नायडू जी थे। उस हेल्थ की कमेटी में अडवाणी जी मेंबर थे, जिसमें हम लोगों ने ये नए कानून बनाए थे। इन सबके समर्थन से कानून बना था भाई। पंजाब पुलिस राज्य के बस स्टैंडों, रेलवे स्टेशनों पर तलाशी अभियान चला रही है। पुलिस ने 195 बस स्टैंडों और 146वें रेलवे स्टेशनों पर 4,650 व्यक्तियों की तलाशी ली। साथ ही 34 संदिग्ध व्यक्तियों को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया गया है। ऑपरेशन के दौरान 7,800 से अधिक वाहनों की भी चेकिंग की गई है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने दिशा निर्देशों पर असामाजिक तत्वों के खिलाफ ये मुहिम शुरू की गई है। इस अभियान के तहत पंजाब पुलिस ने आज राज्य भर के सभी बस स्टैंडों और रेलवे स्टेशनों पर आसपास विशेष घेराबंदी और तलाशी अभियान चलाया। ये अभियान पंजाब के डीजीपी गौरव यादव के निर्देशों पर चलाया गया था। ये अभियान सभी 28 पुलिस जिलों में सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक चलाया गया, जिसके अंतर्गत पुलिस की टीमों ने स्नीफर डॉग्स की सहायता से रेलवे स्टेशनों और बस स्टैंडों पर आने जाने वाले लोगों की तलाशी ली। पंजाब पुलिस वालों ड्रग्स के खिलाफ चलाई जा रही मुहिम ਨੂੰ ਅੱਜ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਲੀਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 28 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ड्रग्स ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸਮਗਲਰਸ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੱਕੀ ਸਥਾਨ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ 2300 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅੱਜ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੇਗੀ।